So students, now let's try to understand the concept of radiation, conduction, and convection. Okay, so I will try my best to explain this on your level. I'm not going to explain it in a very complex way. Now, inshallah, if you will understand this concept, then it will be a piece of cake, to understand this entire picture, that what is exactly sir happening over here. Or घबराने की कोई बात नहीं है, don't need to get scared that sir ये radiation, conduction, convection ये आखिर है क्या चीज़ें, right? So let's try to understand. Now what we're going to do is that I'm going to read it from here first. हम पहले इस literature को पढ़ेंगे और उसके बाद I'm going to show you a picture जिसको देखने से आपको बिल्कुल easily understand आप कर लेंगे कि आखिर ये तीनों concepts है क्या आखिर. Alright? So radiation, number one. For example, heat waves are sent out from the Earth's surface. अब देखें, जो सूरज की गर्माइश आ रही है, जो सूरज की सनलाइट आ रही है, जिससे ज़मीन गर्म हो रही है, अब वो एक रेडिएट कर रही है. इट्स रेडिएटिंग बैक, इट्स रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द स्पेस और इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट? नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट is conduction. Heat is transferred to the air which is in contact with Earth's surface. अब conduction क्या कह रहा है कि heat is transferred to the air which is in the contact with the Earth's surface. अब इसमें और रेडिएशन में इतना ज़्यादा कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, alright, just to make you understand on your level. And adding more to that, convection. Heat moves into the higher layers of the atmosphere because hot air rises by convection currents. Now I'm going to show you that picture, and inshallah after seeing that picture, it will be, again, piece of cake and very simple for you to understand the concept behind all these three different characteristics of this, particular topic. So now here is the picture for you guys. Just hold on a second with me. All right. Up iska example le lein. Let's take the example of this particular phenomenon. So what happens that you see, when you're actually warming something on a stove, okay? So what actually happens that for example, अगर हम कोई पानी boil कर रहे हैं, right? So when we are boiling the water in the pot, so what is happening? हमें ये पता है कि आग, या for example if you have a induction stove, induction stove ऐसा होता है कि उसमें आग डायरेक्ट नहीं लगती. It's like iron coil from which the current is being passed through, and that iron coil turns hot. तो वो ऐसे आग की तरह काम करती है. And let's say in abroad and in a lot of countries, usually people use these stoves, okay, and they work on the basis of electricity, right? So this is how they work. They work on the principle of radiation and conduction. So now let's dive into it. अब हो क्या रहा है देखें. convection का concept हमने पढ़ा कि convection क्या यहाँ पे बोल रहा था. Let me keep this side by side. अच्छा, अब पहले तो हम आ जाते हैं रेडिएशन पे. क्या कह रहे थे? हीट वेव्स आर सेंट आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है ना. अब देखें, जब सन की रेजेस रिफ्लेक्ट करती हैं, जब सन की रेजेस when they hit directly on the earth, so earth surface gets warm, ठीक है ना. अब देखें ना, जब भी हम कोई आयरन की चीज़, कोई मेटल की चीज़ बाहर रखते हैं इन सनलाइट, सो व्हाट हैपन्स, इट टर्न्स वार्म, वो गर्म हो जाती है, राइट? सो हम जब उसको हाथ लगाते हैं, हाथ जलता है. उसके सामने भी हम जब हाथ लेके जाते हैं, सो वी फील सम काइंड ऑफ हीट. तो वो क्या हो रहा है? वो रेडिएशन हो रही है, राइट? द रेडिएशन इज़ हैपनिंग. अच्छा, वो तो रेडिएशन हो रही है जो बिना टच के मुझे पता चल रहा है. बट लेट्स से अगर हीट में इस कॉर्नर पे, स्टील के इस कॉर्नर पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपना हाथ आगे आराम से लेता हुआ आ रहा हूँ. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट आराम से मुझे हॉटनेस फील होगी. और जबकि मैं उस पूरे एरिया पे हाथ नहीं रख लेता जहाँ पे एक्चुअल सनलाइट लग रही थी, राइट? So this is very very simple concept, conduction, which is being shown over here as well. अच्छा, अब convection क्या है कि अब उस हम pot की example लेते हैं जहाँ पे हम water boil कर रहे थे, where we were actually boiling the water. So what is happening over there, that हमें पता है कि on stove, जब stove पे हम कोई पानी boil करते हैं तो नीचे से definitely the flames come from the very bottom of the pot, right? So what is happening, जो पानी बिल्कुल स्टार्टिंग हमने की है गर्म करने की, तो जो पानी बिल्कुल नीचे होगा, that will be more warm, more hotter. अच्छा, फिर automatically this is a process of convection. क्या होगा कि वो गर्म पानी ऊपर आएगा, it'll become colder, and then it'll keep on mixing in the cycles until this entire water doesn't turns completely boiled, right? So this is exactly what happens in the Earth's atmosphere as well. कि जब when this convection process is taking place on the Earth's surface, what is happening? That garam hawa ऊपर जा रही है, and it's being mixed with the colder air. So तभी we usually have really cold air in very cold breeze and winds in Hyderabad at the very night time. So guys, thank you so much for watching this video, and yeah, if you like this video, please share with your friends, comment, and subscribe to the channel as well. I hope these videos are helping you out in your understanding
in your basic in your basic understanding of geography as a subject, and for your school exams as well. So yeah, thank you so much, and see you in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.